The second thing is Part 61 and 141. You and I, both of us have gone through a 141 program, right? Yeah. And Mhm. we found it very nice because 141 program क्या होता है? 141 program is a structured flight training program जिसमें stages होते हैं, and every stage, like stage 1, stage 2, stage 3, all of these stages of training are designed in a way that they build your learning experience to eventually end up at the same place that you would be if you went through a Part 61 program. And Part 61 प्रोग्राम में स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई स्टेजेस नहीं होते, जिसको जैसे करना है वैसे करना है। एक जितना भी रिक्वायरमेंट्स है वो तुम कैसे भी मीट करोगे, कोई भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता है। पार्ट 61 में सिर्फ एक एग्जाम देके यू गेट द लाइसेंस। बट पार्ट 141 में थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें दे ट्राई टू मेक इट सो दैट स्लो एंड एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस हो। Books, references, the things that you need to learn are the same, but a very important distinction between parts 141 and part 61 is the minimums. मतलब जो minimum hours of flying we need to get a particular, to be eligible for a particular license or a certificate as we call it in the States, it's lower or reduced minimums for 141 programs. क्यों? क्योंकि उसमें structure होता है. The structure is approved and all these programs have to be approved by the FAA. तो जैसा कि आपने और मैंने 141 programs किए, वो सारे programs approved थे. So someone went over the whole program and decided कि नहीं, ये सही stages है and this is a good step towards learning, right? तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है अबाउट 141 एंड 61. एंड टू रिलेटेड टू द वीजा, 141 schools allow you to be eligible for an F1 visa because Mhm. F1 programs are a little sophisticated or a little higher level of learning than M1 programs. And obviously, 141, because of its structure, they are allowed to be eligible for F1 visas. तो हम जब वीजा सेंटर जाते हैं फॉर आर स्टूडेंट वीजा, इफ वी हैव एन 141 I-20, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है विच टेल्स यू के यू आर एनरोल्ड इन अ 141 स्कूल, तो वो लोग हमें F1 वीजा के लिए अप्रूव कर सकते हैं. And Part 61 schools are usually, and Part 61 programs would usually give you only an M1 visa. Yeah. What do you like to add something? Would you like to add something? Yes. So, if you are considering as of now, you would be training as per DGCA standards, and you want to come Mm-hmm. back to India after you are done with your flying. Right. There are a couple of things which I considered during my flying, Mm. and as Chintan said, I have done it from Part 141 as well. So Part 141 academies do have this advantage of internal examiners, Mm. where they are allowed Right. to have internal examining authorities, instructors as their check instructors who are employed with them and who are Mm. full time working at the same academy. Mm. So this is a very big thing, and also a big wait times are incurred in getting any check instructor in US. Mm. On an average, it might take 1 month to 1.5 months from getting an instructor based on your location, your state, where you Right. are, and the availability of check instructors. Mm. It might take a month or a month and a half for that check instructor to take your check after the hours Mm. when you are ready for the check, actually. Okay. And also, you had, in case of this external check examiners, which is basically solely for Part 61 schools, where you have to get external check examiners, you have Mm. to pay extra as well. Pay to Right. that examiner on top of what you are paying to your flight schools, which Okay. is most of the times not being disclosed before you go from India to that flight schools. This is an extra cost. So per examination or per check ride, it is Mm. around $800 to $1,000 as of now. Correct. That Mm-hmm. again depends on state to On state and the examiner to location. examiner. Right. Yeah. Okay. So these So are the two things. let me connect it to what I said. Like Yeah. part 141 में
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली. सो पार्ट 141 में जैसा मैंने कहा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है. सो टू गो फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, उस स्टेज का एग्जाम रहता है. लाइक इट हैज अ Yeah, स्टेज चेक. सो दैट स्टेज चेक इज कंडक्टेड बाय एन इन हाउस एग्जामिनर. जैसा वरुण ने yeah, बोला कि वो फ्लाइट स्कूल के ही एग्जामिनर्स होते हैं जो स्टेज चेक्स भी ले सकते हैं और फाइनल एग्जाम भी ले सकते हैं. yeah, सो दैट इज अ बिग बिग saver of money and time, because फॉर एग्जाम्पल काफी सारे फ्लाइट स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा एग्जामिनर्स होते हैं और स्टूडेंट्स रिलेटिवली कम होते हैं. तो फिर hmm, एग्जामिनर्स की अवेलेबिलिटी में बी जस्ट इन द नेक्स्ट वीक यू कुड गिव द yeah, स्टेज चेक, राइट. बट सम फ्लाइट स्कूल्स हैव लेस एग्जामिनर्स, तो ऐसा हो सकता है कि तुम रेडी हो स्टेज के लिए पर एक महीना बाद वो एग्जामिनर अवेलेबल है. yeah, बट यस, वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट. पार्ट 61 में क्या होता है कि यू गो अबाउट लर्निंग द वे यू वांट, कैसे भी करो. मेक श्योर यू मीट द रिक्वायरमेंट्स, एंड जब तुम्हारे एग्जामिनर को तुम्हारे इंस्ट्रक्टर को ये लगता है कि तुम रेडी हो, इज गना सबमिट यू फॉर yeah, एफ ए चेक राइड. और वो एफ ए yeah, चेक राइड इज कंडक्टेड बाय एन एफ एज डेजिग्नेटेड पायलट एग्जामिनर. और yeah, वो हमें लोकल एरिया में ढूंढना पड़ता है. वी हैव टू yeah, फाइंड हिम. ही इज नॉट अफिलिएटेड टू योर फ्लाइट स्कूल, ही इज एन एक्सटर्नल, ही इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर. तो वो आएगा टू योर फ्लाइट स्कूल, ही विल यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द फ्लाइट स्कूल. द प्लेन भी तुम फ्लाइट स्कूल से रेंट करोगे और उसको लेके यू विल गो आउट एंड डू द hmm, एग्जाम. yeah. सो वेरी इंपॉर्टेंट, या. This is actually important as of my, I mean, the people who are watching this at this stage, it won't be making too much of a difference to you. But trust me, agar, if you have to go and search for examiners and the wait time is, even if it is 10 to 15 days, राइट. it does affect your flying because you are not हम्म. fresh after your हम्म. lessons. यस. सो आप अगर 10-15 दिन का गैप के बाद चेक रेट दे रहे हो तो आपके परफॉर्मेंस पे 100% इट डज अफेक्ट एंड यप. योर परफॉर्मेंस वुड नॉट बी अप टू द मार्क एज इट वुड हैव हम्म. बीन अगर आपने चेक रेट विद इन अ वीक ले ली होती. सो दैट इज हाउ राइट. इट अफेक्ट्स एंड दैट अफेक्ट्स इन योर इंस्ट्रूमेंट चेक रेट एंड कमर्शियल चेक रेट द मोस्ट. करेक्ट. एंड या समथिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जब तुम्हारे एग्जामिनर्स वो लोग होते हैं हु आर विजिबल टू यू लाइक एवरी अदर डे, तुम्हें या दिख रहे हैं वो लोग. लाइक या यू सी देम एट द फ्लाइट स्कूल, यू माइट नॉट इंटरेक्ट विद देम, बट तुम्हें पता है कि ओ चिंतन तो वो है, वो मेरा एग्जाम लेगा. या लाइक या जब उसका नाम इट कम्स अप ऑन आवर स्केड्यूल के चिंतन इज योर एग्जामिनर, देन यू नो द पर्सन. फिर अगर करेक्ट. कोई बाहर से रैंडम पर्सन आ रहा है, यू प्रॉब्ली मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, और वो तुम्हारी एग्जाम ले रहा है, सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एक्स्ट्रा लाइक नर्वसनेस या because it's an unfamiliar face. So yeah. So करेक्टली. basically 141 school has a lot of pros, and even academically तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड मिनिमम्स है, तो कॉस्ट कम होगा. एंड देन इट क्रिएट्स लेस फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मोस्ट फ्लाइट स्कूल्स विच आर 141 दे आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एज वेल. मतलब तुम्हारा या जो लेसन्स है सारे इंडिविजुअल लेसन्स का भी आउटलाइन तुम्हें मिलेगा कि इस लेसन में क्या करना है. इट्स ऑल देयर ऑन देयर वेबसाइट या कुछ भी, राइट. बिकॉज दैट्स हाउ दैट एफए रिक्वायर्स देम टू हैव अ प्रोग्राम. तो तुम जिस पर्टिकुलर लेसन के लिए स्केड्यूल्ड हो, उसका तुम्हें पता है कि ये एक्सपेक्टेशन है. एंड देन आफ्टर दैट द इंस्ट्रक्टर विल एक्चुअली कम डाउन एंड राइट कमेंट्स और ग्रेड यू. तो तुम्हारे फ्लाइट लेसन के बाद तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कैसा तुमने परफॉर्म किया. And then करेक्ट. it's available to you for even reflecting on how you're improving or what you need to improve on. ऐसे घर जाके आराम से बैठ के भी you can see कि okay, 4 फ्लाइट लेसन्स पहले मेरी लैंडिंग्स ऐसे थे, अभी ऐसे है, so I've improved. Yeah, I have to improve on these things. So academically as well, 141 is much better, and I think it's more productive as well. Yes. I mean, just put it in a nutshell, why this point was included. Uh, it is because if you are coming from India and Hmm. going back, I know Part 141 schools might be, it might seem costly as far as per hour costs are concerned, and also the instructor costs.
Right, right. Both of them, as compared to Part 61, would be 100%. The 141 would be costly, but you Hmm. have to look at how as well does this in 150 ए नाम hours. मत ले. So, No, no free so, promotion. No free so promotion. yeah, so there are schools, they do it in 150 hours, but those are some professional programs. Those are specifically designed programs. But I mean, as far as DGCA programs are concerned, in a nutshell, you should consider 190 hours are the minimums for 141 set by FAE. Right, right. Yeah, that is what it means. Okay, So so that's yeah, you good. can move on to next one.